नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल पे आपका फिर से इस बार स्वागत है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, please take a moment to subscribe to my channel. I will be really thankful to you, and if you have already, thank you so much. So in this video I am going to review a makeup combo which I have received from Flipkart. I have already opened it because इसे मंगाए 1-2 महीना हो चुका है, but I was not able to shoot my videos. So let's get started. Let's see इस बॉक्स में है क्या. तो दिस इज बेसिकली अ मेकअप कॉम्बो. आई हैव गॉन टू थ्रो मच ऑफ मेकअप कॉम्बो एंड आई थिंक इसमें वो सारी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए. बेसिकली नॉट सब चीज़ें भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें ही हैं. बट लेट्स सी how my makeup comes out with it. So first let's open it. This product definitely we should use it. This Prep plus Prime Essential Oil. नाम सुनो, Prep plus Prime Essential Oil Hues Essentials. because Essential की स्पेलिंग गलत है और Hues क्या होता है. and that is MAC and this MAC का है. MAC के प्रोडक्ट्स मुझे 400 में मिल गया है. oh my god, 14 ml है ये. स्मूथ सा बॉटल. ना ये क्या है. डेफिनेटली ऑयल तो फील हो रहा है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी है ये. Because I'm just going to इसमें तो मतलब कुछ नहीं है. अगर इन्होंने एसेंशियल ऑयल लिखा है तो इट इज डेफिनेटली नॉट एन एसेंशियल ऑयल, बट इट इज ऑयल. आई कैन हाइड्रेट. लेट्स give it 2 minutes to soak into this. So the next product is infallible mattifying base. मतलब ये भी एक प्राइमर है. इसमें दो प्राइमर दे रखा है. तो आई कैन सी नो वन हैज यूज्ड. पानी है. स्किन लग रही है हाइड्रेटेड फील हो रही है. And it is definitely giving a little shine, and this is blurred in my pores. Definitely it is working. So I can say भले ही इसका consistency watery है, but it is working. जो ये लिखा है ना mattifying look, I can see matte finish over here. So it is definitely a mattifying primer. But oil is really oil. I'm sad about that. And let's move further. We have this Rose Leaf Makeup Foundation, Liquid Silk Foundation. So first I'm dipping my sponge. ठीक है, लग रहा है हाँ कोई अच्छा फाउंडेशन. I think I need to build a little bit over here. Let's see. इसके बाद भी कुछ मतलब it has not like so much work to my skin. ऐसा लग रहा है ना खाली है. बहुत लिटिल लेना है, बहुत लिटिल, बिकॉज मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है. But let's try over this area and then only we can cut this area. तो यहाँ पे कुछ करता है. लग रहा है ना. It is getting so easily dissolved in our skin. I feel it is a tinted moisturizer. I really feel it is a tinted moisturizer because इसने definitely मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चराइज कर दिया है. But it has not given any coverage. If I've seen ये इसके साथ रब हो जा रहा है, ये इसके साथ ही बाहर निकल आ रहा है. So next thing I'm not going to use this. Sponge though I think so it is working, but I think it is not working with this foundation. Now it's time for a concealer. ये क्या है? MAC Mineralized Concealer Cash. MAC concealer I have just got 100 rupees, guys. Steal deal. But let's see how it works. Oh my god. Okay. शीशे की बॉडी है. Good packaging. Font. कोई प्रोडक्ट नहीं बाहर आ रहा है. कोई प्रोडक्ट है नहीं है, पता नहीं. डेफिनेटली इतनी से प्रोडक्ट्स कुछ नहीं होने वाला.
यू कैन सी कैसे प्रोडक्ट बाहर है, लाइक ऐसे करना पड़ेगा। ये साइड देखो शीशे में देखने भी लगा, प्रोडक्ट तो नहीं है इसमें, पता नहीं इन्होंने मुझे क्यों दिया। It is good, मतलब ठीक है, I can work with this, but not always. Means if I can see it has done work overdoing है, मतलब it has डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही दे दिया, तो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली कुछ नहीं है, बट इट इज़ लाइक डूइंग, इट हैज ब्राइटन ऑफ माई आई। सी विद दिस में कंसीलर फाउंडेशन ने नहीं किया था, कंसीलर ने मुझे कुछ तो क्या कहते हैं कवरेज दी है, सो आई कैन सी, आई थिंक आई यूज विल गो NC25 मिनरलाइज फाउंडेशन और लूज पाउडर फॉन्डी टिंट पाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी आपने मैक का जो भी है ये प्रोडक्ट के ओनर, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, चलो ठीक है, जैसे प्रोडक्ट का नाम तो सही रखो यार, एटलीस्ट वी कैन रीड इट। स्पॉन्ज है, लूज पाउडर है, मैं नहीं यूज कर सकती, सॉरी आई कांट रिव्यू दिस, आई कांट टेल यू अबाउट दिस, क्योंकि ये कोई भी नहीं यूज करता। इट फील्स लाइक ऐसे बचपन में हमें दवाई नहीं मिलती, बचपन की जो दवाई नहीं होती थी हमें स्कूल्स वगैरह में या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती थी, एंड हाउ दे स्मेल, दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्मेल। और मुझे लग रहा है उन्होंने सारे जो दवाएं थी हमने छोड़ी थी क्रश करके हमें वापस भेज दी है। नो लेट्स सी कॉम्पैक्ट, चलो इसमें we have mirror, curl, we have, oh my god, we have two products. It has been, अच्छा इधर लेकिन कंपाउडर प्लस कंसीलर, कंसीलर कौन है, कॉम्पैक्ट, इसमें शाइन है तो मे बी ये कॉम्पैक्ट हो और मे बी ये कंसीलर। तो अब अपॉन पाउडर ब्रश, लेट्स सी, पहले मैं कंसीलर देखती हूँ कि इसमें कुछ कवरेज है। It's nice. See, बहुत डस्ट ऑफ भी नहीं हो रहा है। This is nice यार, कोई ऐसी स्मेल भी नहीं है खास भी, I can't know it. Now let's go with compact. What I do with compact is only this much. Damn face. शाइन वो कहते हैं शाइन भी है, तो वो लूज पाउडर तो मैं दोबारा नहीं यूज़ करने वाली, बट डेफिनेटली आई विल गो विद दिस पाउडर, मतलब ऐसे कभी हल्का फुल्का मैं लगा सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट यू विल सी दैट नेक्स्ट थिंग इज, इसमें क्या लगा, क्या है लिपस्टिक, बट आई हैव नो आईलाइनर, नो आई शेडो, मतलब नो आई शेडो एंड नो कॉन्टूर, तो और आई एम टेकिंग दिस, इट्स गुड, लाइक इट्स गुड कलर, चिपचिपा भी नहीं है मैंने दोनों पे लगा। लेट्स सी इट्स वर्किंग। It's blending so well. You can see I just smelled it. Okay, that's it out. It's a little different. Now I will just use it for a little bit of my blush. क्योंकि ये बहुत अच्छे से blend हो रहा है इसलिए, and it is highly pigmented. I trust me, pigmented so good. Good pigment. I have not seen any the local product working like this. Seriously, trust me. मैंने I can see myself
using this lipstick. I can see myself. देखने में लोकल वाला लग रहा है। इसकी पैकेजिंग मुझे प्लास्टिक आती है ना मोटी मोटी, वो वाली है। वन तो चलो this is a jet black. Let's definitely this is like pretty थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है पे थोड़ा सा भारी बट थिंग इज ठीक है, कलर भी ओके है। प्राइस वैल्यू के हिसाब से देख I can feel really something on my eyelashes. It feels heavy. But if you ask me with the price value, मतलब जिस प्राइस में हमने से खरीदा उस हिसाब से, तो it's fine, it's good. But you're asking I'm going to use this thing on the no. But if you want to try this, font पहले देखिए कितना मोटा है, it's so heavy and it's working good है। You see the difference? See, मतलब it is definitely a linen mascara. सूख जा रहा है तो बहुत जल्दी होगा, तो if I see I'm going to use this thing, सूख गया तो if you see I'm going to सकता वाटरप्रूफ भी है क्या यार भैया? If you ask me I'm going to use eyeliner or not, so definitely I'm going to, because it is very easy to use and it is like good, मतलब ठीक है, सही है। इस टाइम पर लिपस्टिक तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कलर। इसमें ना बहुत ज़्यादा कैमरे पे ना ये रेड आ रहा है, इट्स बेसिकली पिंक टाइप। मैं पता नहीं क्या मतलब रेड क्यों आ रहा है, पर ये ना बेसिकली पिंक टाइप का मेकअप फिक्सर। बहुत बड़ी बॉटल है, नो सच लाइक स्मेल। तो मैंने लिपस्टिक लगा दिया, सी इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं बहुत छोटे हैं। मीन ये सच में वाटर बेस्ड था, इट इज नॉट सो मच अल्कोहल जैसा स्मेल बिल्कुल नहीं आया इसमें। थोड़ा सा दवा वाली स्मेल थी, बट आई थिंक सो इसने फिर इफ यू सी इट गिवन मी दैट मैट लुक व्हिच आई डेफिनेटली लव इट नाउ। If I think the look has been really turned out to be nice. It is like really matte finish and the lipstick color I will definitely, it's really good. And to show you all is this MAC Gently makeup remover. This is matte makeup remover. I want to try this because पता नहीं क्यों मुझे है लग रहा है कि इसमें वो 2 ड्रॉप मैंने इस पे लिया। Does something on no such a smell, no unpleasant smell, nothing, and it wow. This is what yeah, favorite product. Like oh my god, ये सच में रिमूव कर दिया था सॉफ्टली, there's no such irritation, nothing, so
the nail art. I will see. If you want to see this thing, then do follow me on Instagram, Prerana for Life, and I will go to review it there. I think so. When I will need, then I will go. अभी तो मेरे nails बड़े हैं, but I have not done it, and I'm not in the planning of doing anything. I am just going to keep it like lashes. Definitely, I'm not such a fan of lashes. I am okay with my little bit of lash. Don't want that heaviness. So overall, the look has turned out to be really nice, and I'm happy with how it turned out. It is worth the money or not, if you ask me. अगर कुछ product को छोड़ दिया जाए, तो it is really worth the money. Means के product में क्या ही expect कर देते हैं, but this is worth it. I think so. But if you ask me, I recommend this, but no, because these products are not safe to use on skin again and again. Because I think so, we should always go for good, affordable products. इतना सस्ता भी चीज़ ज़रूरत नहीं, but हाँ मैंने ये खरीदा है तो मैं कभी ना कभी हल्का फुल्का इनमें से कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी ही, क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं तो मुझे तो यूज़ करना है. I just can't let it go off like this. So मैं कुछ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज़ करूँगी, कुछ प्रोडक्ट लाइक दिस पाउडर आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू टच दिस. दिस इज डायरेक्टली dustbin, and everything is like okay, I can work with this. Like if you see my look, I'm really happy how it turned out to be like simple and like it's so matte defined look, and I'm happy with that. So if you like my video, please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my videos. I'm really grateful for each of you all. Love you all.